Much of my responsibility has been already taken care of by Sonia. Scholars have already discussed the text, the book, the content, the highly thought-provoking nature of the book, and they have made their own specific points. There is much to say, but at the same time, I would like to draw your attention that, as Bettina-ji has pointed out, this book is more about the context in which we are gazing at West today, or we have to. For we have been accustomed to see ourselves from the window of the West. For all these 2 or 2.5 centuries, we have been looking towards ourselves from the window of the West. The very, very important issue which has been raised by Rajiv Malhotra in this book, that now this is the time when we have to see our own being from our own window on one side, and then we have to look at the West also from our own window. Kamala Batsyan has been arguing for this for quite a long time. She has done, and you have very, aptly referred to her own views in this regard. Friends, it's a question of establishing a dialogue between the two great cultures. It's a question of the intercultural dialogue, how to carry it forward. It cannot take place, and it should not take place with any sense of hegemony, as Pujol has already pointed out, hegemony of the discourse, one particular discourse. It cannot take place with the sense of arrogance, and at the same time, it cannot expect the other side to be submissive. This is not the way of forging a dialogue between the two sides. I'm so much delighted that Rajiv Malhotra has discovered his own methodology for just starting this dialogue. I remember a few years back, I was in Thailand. An international conference was organized in Assumption University of Bangkok, and the theme was the inter-religious dialogue. I was the one representing India, and my mind went back to our own tradition, how this inter-religious dialogue has taken place in our own tradition, and then I pointed out that ours is a very, very long experience in this realm. We evolved a certain methodology which is called Shastrartha, and where we engage into the discussion by putting forward the Purva-paksha and then establishing the Uttara-paksha. What is this Purva-paksha?
Purvapaksha expects that whenever we starting the dialogue, we have to put first the prima facie view, which may be very authentic, which may be presented in most authentic way of the one with whom we are going to start the dialogue. The authenticity of the Purvapaksha is checked by the later tradition whether certain references have been given correctly or not. It all depends upon the great Shastrarthi to speak and to state things in a very, very methodical, rational, logical way. While offering the reply, first you are expected to restate it. It is called anuvada. Unless you are able to restate the entire argumentation, you cannot start your own presentation. So, what is the view of the one with whom we are engaging? We are engaged in the dialogue. That must be done in a most methodical, logical, reasonable and authentic way. Only then, one by one, we can either refute or accept. This is how the Shastrarth method was employed, and you are starting this sort of samvada here in this city, holy city of Varanasi, which has been a seat of the Shastrartha. For centuries, it has been a center for the Shastrartha. Varanasi developed that new school of logic for that, new school of grammar, new school of Vedanta. All these new schools emerged here from Nadia to Mithila, from Mithila to Varanasi. This has been our practice, and I am delighted to know that the way you started, this is our own. This is our own. This for the last 250 years. The problem has been the translation of the text on the one hand and the methodology employed for the translation. You have referred to obviously the role of that profound scholar William Jones. Only one side of the William Jones is known to us, but the way you have presented it is something unique. The hidden agenda was there not after in the 19th century. It was already present there. It was some very valuable information for me also, because I thought that out of all these scholars, at least James Prinsep and William Jones was more liberal, more sympathetic, rather more inclined to Indian thought and Sanskrit. But when I read, I have to check it, because when you are speaking, then I have to check and recheck it, whether it is how to understand this paradox. But these paradoxes are there. With the emergence of the historical and comparative philology, the methodology for the translation was employed, that of the historical and comparative philology. And what happened? By the middle of the 18th century, Roth and Franz Bock, they impressed upon the scholarship of the world that while translating the Vedas, we need not go back to Indian tradition. We are sufficient. And the argument was, the logic was, that they are as distant from the Vedas as we are. The oldest commentator of the Vedas available is not beyond 6th century, 7th century, 8th. And the Sayana is much later. And therefore, why to rely on Sayana? We have got a scientific methodology and we can know better the Vedas.
here from. The gap starts between the text and the translation. Later, the methodology dictated by modern anthropology, which begins only after the first half of the 19th century, and that was employed for understanding the Vedas. And now it is the structuralism or post-structuralism which is the hallmark of the Western interpretation. This is something very, very important. I am not opposed to the employment of application of any methodology, but first of all, you have to understand it, the context in which those texts were written, and then you can examine it, re-examine it. But our own apprehension is that from the very beginning, this sort of approach, attitude was there. There is a very important book written by a German scholar. I have brought it here. It is something very important. Yeah. India and Europe by Hogfast. So he has narrated what was the attitude, what was the approach, and our own resentment is that of the biased, arrogant, one-sided view of India, as Bettina has already pointed out. It is not that that is the only approach available in the West. This will be, I mean, to state like that, this will be, this will not be true. There are exceptions. They have tried to understand India correctly. The galaxy of scholars are there. For instance, if you have to understand Indian mythology, there are instances they have tried to understand. There is one MacDonald, there is another Bloomfield. Much before that, there is Uzena, who has approached, who has understood Indian mythology from a very different perspective, and he interpreted Vedic religion, which continues for so many years, that Vedic religion is only the religion of a primitive religion, and the Vedic gods are the departmental gods. They are the forces or the aspect of the insentient nature, and therefore it is something primitivism. This was started by Uzena. Griswold followed it. And after Griswold, this continues even today. Our own departments of history, they teach that Vedic religion is the nature worship. It means that it is the worship of the prayer of the insentient forces and the aspects of the nature. This sort of understanding was followed by even that great scholar Max Muller. He tries to understand the entire Vedic tradition, Indian tradition, in terms of this polytheism, pantheism, monotheism. These are the most ticklish points, and they have given rise to entire this misinterpretation of the Indian thought. So I think that Rajiv Malhotra has drawn our attention to this long history of 200 years of the Western interpretation, and where you can have exceptions. For instance, if you are interested in Indian architecture, Indian arts, then can you ignore Stella Kramrisch? Can you ignore Bettina Baumer? Can you ignore? Yes, she is here and she is here. She represents a full tradition of understanding Indian arts, aesthetics, as well as other things. I mean, she is the representative of Alice Bonner, a great rishi. She has done. So, this aspect
is also very, very important. But Rajiv ji, what you have done, I understand the context. In this context is to be understood properly for in the age of modernity. They were a bit tolerant. They thought that, well, let us speak in our own language. You can carry forward your own views. But today, in the postmodern era, it is not. In spite of everything, I understand what is, tons and tons of the books have been written on postmodernism. So, we cannot put everything in one basket. But at the same time, what is the dominant trend of the postmodern thought? They are more aggressive. They are not today that way tolerant. They have achieved their economic, political ends. Now, this is the time for them that for global market, for that individual consumerist man, you need total domination, including the cultural domination. Therefore, if you write such a book, brilliant book, I think it is for us. I wonder who will be the reader when you are so aggressively arguing against the Judo-Christian tradition. For whom you are writing? For the West? I think we are the readers. We have to go through this book. We have to understand the entire history of the Western interpretation. And from that, we have to distinguish this scholarship, which starts from from 19th century. Scholars are there, French scholars are there, some of the German scholars are there. They have interpreted India in correct way. So I think that may also find some place in your future writings. It is not, as Professor Indranath Chaudhary has pointed out, that we are trying to understand the difference, the exclusive sort of exclusiveness of the Western tradition, and especially, and then we cannot identify the two, the American and the European. I still consider that Europe is different from America. We are intellectually, we are nearer to Europe. At least there is some sort of, some quest is there. Maybe entire, in post-Renaissance period and after Industrial Revolution, the colonialism is the dominant spirit of the Western thought. But that is not the only spirit. That is how we have to look things in its entirety. Much has been stated. There is no time to make even the shortest sort of comments on things, but as Pujol pointed out, so many things. This understanding, the knowledge, if you maintain, if you think that there is the complete lack of the analytical knowledge in Indian tradition, then I would like to understand where from this brilliant science of Ayurveda emerged. If it is so, then how it happened that another text of Arthashastra is there? If it is complete lack of the this sort of rational approach, reason, so maybe Western line is different, our own line is different, and therefore when Malhotra argues about the integral and the synthetic unity, he is trying to attract our attention to these two fundamental points. लगता है मुझे थोड़ा सा हिंदी में बोलना चाहिए.
ये जो बच्चे हैं इन्हीं के लिए तो आपने किया है, और ये नहीं अगर सुनेंगे समझेंगे तो फिर होगा क्या? जो बात है, आप जो बैठे हैं, टीना जी जो कह रही हैं कि ये धार्मिक ट्रेडिशन है, उस धार्मिक ट्रेडिशन को आगे ले जाने वाली वो पीढ़ी कहाँ है? वो तो दिखाई पड़नी चाहिए यहाँ पर, कम से कम कुछ तो है। ये कोई आकस्मिक बात नहीं है कि इस तरह की चर्चा, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हिंदुस्तान की दूसरे विश्वविद्यालयों के भांति नहीं हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए हुई है। इसकी स्थापना इसलिए हुई थी, मानवीय जी महाराज ने बिना इसको कहे ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरोध में बहुत योग करना था, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में कर रहे थे, यहाँ इसकी बात नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने इसकी स्थापना इसलिए की थी कि विचारों का एक स्वराज यहाँ पर उदय हो। उसका गांधी जी ने जिसको हिंद स्वराज के नाम से कहा था, उस तरह का स्वराज जो सनातन धर्म थी, ये धार्मिक ट्रेडिशन, इस धार्मिक ट्रेडिशन की बात किसने की इस समय में? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की, तिलक ने। वो जो धर्म स्वराज की बात थी, धर्म ट्रेडिशन की बात थी, वो यहाँ आई है। और इसलिए ये जो राजीव जी ने पुस्तक लिखी है, मैं कहूँगा कि इसका हिंदी अनुवाद छप करके और आना चाहिए सामने, इसका फारसी भाषाओं में अनुवाद छप करके सामने आना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए हो या ना हो, हमारे लिए ये, इसलिए हमको इसको ठीक तरह से समझना चाहिए और बहुत विवेकपूर्ण ढंग से, क्योंकि यहाँ कोई स्थान नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पंडित विद्यानिवास मिश्र के सामने उठाए गए थे। उन्होंने एकमात्र पुस्तक है हिंदू धर्म में सनातन की खोज। अगर हिंदू धर्म को, भारतीय धर्म को समझना है तो उससे अच्छी किताब अभी तक मैंने किसी भाषा में नहीं देखी है। फ्रेंच में रेनू ने लिखा है, मदाम बियार्डो ने लिखा है, लेकिन वो बहुत सतही है, वो सारी उस गहराई को वो समझ नहीं पाता, धर्म के उस स्वरूप को। हिंदुस्तान में जाने कितने लोगों ने हिंदू धर्म पर लिखी है किताबें, लेकिन हिंदू धर्म में उस सनातन की जो खोज है, वो जो सनातन तत्व है वो कैसा है, और फिर जो प्रश्न उठाए गए हैं, तो हमारे उनके सामने, विद्यानिवास जी के सामने भी प्रश्न आए थे। 3 प्रश्न से एक रोमानिया के दार्शनिक ने उनसे सवाल किए हैं। उन सवालों का जवाब उन्होंने इस हिंदू धर्म की में सनातन की खोज की परिशिष्ट में दे रखा है। महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि यदि हम, आपने जो कहा कि बहुत कुछ हम पश्चिम को तो देख रहे हैं, पर आपकी किताब से अभी वो बाकी है आना कि हम खुद अपने को देखें, जो क्या कहीं विरोधाभास सा, कहीं अंतर विरोध सा, कहीं हमारी जिंदगी में भी तो दिखाई पड़ रहा है ना, वो क्या है। उनसे पूछा था उन्होंने कि अगर ऐसा सब कुछ ठीक है तो क्या कर्म का सिद्धांत और एक जो आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस है, इसमें विरोध आपको नहीं दिखता? क्या ऐसा तो नहीं है कि वह जो एक सार्वकालिक और सार्वजनिक न्याय की अवधारणा है, उसका और कर्म की अवधारणा से मूलतः विरोध तो नहीं है? एक प्रश्न उनसे पूछा गया था। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था, जो रोमानिया के दार्शनिक थे, और उसका पंडित ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। दूसरा प्रश्न पूछा था उन्होंने कि अद्वैत इस चिंतन की पार्यंतिक अवधारणा है, अद्वैत पर जाके पहुंच जाती है, फिर वहां इतना बड़ा भेद जाति को लेकर के, समुदायों को लेकर के, वर्गों को लेकर के इतना भेद क्यों? क्योंकि अगर अद्वैत ही चिंतन का पार्यंतिक बिंदु है तो या तो समता होनी चाहिए, तो लेकिन बात वो ऐसी नहीं है।
यहाँ तो बड़ी विषमता दिखती है, और इसका पंडित जी ने उत्तर दिया है। ये जो प्रश्न है, माने what appears to be such a paradoxical situation that we talk of the monism, but at the same time appears that social philosophy, has it been developed in India or not? This is the query in my own mind also. What has been the history of the social history of India? So we cannot ignore all these questions, and so is the question of the social justice. What is going on? India, contemporary India, is struggling against all these things, all the odds. But see, contemporary India is trying to discover the answer also. It is not by embracing the other tradition. The answer is that it will happen by remaining in our own tradition. Maybe if it is not Vedic, maybe it may be Buddhism. It's Buddhist. But the answer is there. And therefore, the way you argue, it is the Dharmic tradition. It is not Vedic tradition. It is not Buddhist tradition. It is not Jain tradition, nor even Sikhism, nor Sufi. It is the Dharmic tradition. For Dharma is a very, very wide concept in which they are all. But it is also, it should not be a khichdi. As this multiculturalism, this pluralism should not be some attempt of khichdi. There must be some uniformity, universal. This is how we have to understand. और ये जो आपने जिस अंतर्विरोध को कहा है, इस पूरे पश्चिमी चिंतन केंद्र, जो अमेरिकी साहित्य और यूरोप के साहित्य जो अंतर्विरोध है, वो उनके भीतर है। वो है एक और यूनानी परंपरा का जो बिल्कुल उद्दीप्त तर्कवाद है, और दूसरी ओर जो हिब्रू परंपरा का, इस जो यहूदी परंपरा का जो डॉगमा है। अब इन दोनों को मिला करके और वेस्ट का थॉट आगे, तो अंतर्विरोध तो सब जगह होता है, यहाँ भी है वहां भी है। और उस अंतर्विरोध का उनको लगता है कि वो सोशल जस्टिस की अवधारणा उनके यहाँ है, और इसलिए बड़ी समता का समाज वो बनाने वाले हैं, उत्तर समता का दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, very crucial question is where appears the superficial sort of inequality, there lies the intrinsic and inner अद्वैत। जब भीतर अद्वैत होगा तो ऊपर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो वैषम्य होगा ही। वह वैषम्य ऊपर का है। गांव की जिंदगी में देखने पर, विद्या निवासी ने इसको बार बार कहा है, उस हमारी जिंदगी में भीतर से वो ऐक्य है, ऊपर से वैषम्य दिखाई पड़ता है, भीतर से सामने है। यह तैः जितः स्वर्गः येषां साम्ये मनस्थितम्, श्रीमद् भगवद गीता। यही बताइए जितः स्वर्गः। साम्य का मतलब होता है अद्वैत। साम का अर्थ बराबरी नहीं होता है, साम्य का अर्थ अद्वैत होता है। इसके रहते हुए ये जो एक तरुण, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब ये सवाल मेरे मन में आया था कि करोड़ों करोड़ लोग शताब्दियों से इतने दुख में जीते आए हैं, इधर क्यों नहीं किया जा रहा था, हमारा ऐसा क्यों हो पाया? ये प्रश्न है जो हमारे बीच में उठते रहे हैं। मैं एक तो जिस तरह से आपने पश्चिमी पूरी संस्कृति का विश्लेषण किया है, और संश्लेषण के द्वारा एकता को पाना, और इसके विपरीत भीतर से सूत्र में बहता हुआ जो ऐक्य है उसको पाना, जिसको आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है, वो वही हो ही सकता है। आध्यात्मिक शब्द ही वैसा है। ये बातें, और जिस तरह से फिर ये जो अनट्रांसफरेबिलिटी की बात उठाई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
कम्युनिकेशन तो होनी है, किसी न किसी तरह से तो होनी है, उसका जवाब क्या? उसके लिए ऐसे लोग निरंतर कोशिश करते रहे। उनके लिए अभी अभी दिल्ली में हो ही रहा था, आपको उस समय आए थे, प्रयास चल रहा है कैसे होगा। आपने जो अपनी किताब है उस किताब पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। किताब जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, मैं उसको मानता हूँ, उस पर पूरी बात जो जिस तरह से आपने उसको उठाया और उन्हें कैओस को दे करके, और जो जिस घटना का आपने दिल्ली में उदाहरण दिया है, वो यूनिवर्सिटी से कोई डेलीगेशन आया था, तो when you ask some inconvenient questions, then the answer is the smile. This cannot happen. When questions are asked, when we are meeting at thought level, then things should be met by the thought. जब आप उस नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो नॉलेज सिस्टम पूरा का पूरा कंज्यूमरिज्म के ऊपर टिका हुआ है, उसी के लिए सब कर रहा है, उसके पीछे the paradox of the human thought lies in the fact that the supermost, the dominant value for them is democracy and freedom, as pointed out by Osborne. But the other paradox is that the human consciousness is determined by forces outside the consciousness. For Marx, that determinism may be of one kind. For Freud and Jung, that determinism may be of another kind. For the postmodern thinker, the determinism may be of the third kind. For this is the age of technology. Now technology will do its own job. It will determine our own consciousness. If it is so, then why you talk about freedom? If freedom is determined by some force outside the consciousness, then no freedom can be attained by human beings. Therefore, freedom must arise from our consciousness. अगर हम चेतना ही हमारी कहीं बाहर से निर्मित हो रही है, तब तो कोई कहीं से भी उसको बदल सकता है, ऐसा नहीं है। इसलिए जिस विद्या का अध्ययन हमारी प्रोफेसर विद्या जी कर रही हैं, वो देता है सब, वो स्वतंत्रता है क्या, वो स्वतंत्र की अवधारणा है क्या, वो स्वतंत्र कैसे भीतर हम में ही परिनिष्ठित है, हमारी पूरी सत्ता उस स्वतंत्र में ही है। ये तो अस्तित्ववादी अवधारणा भी नहीं है, आप उससे भी नहीं कर सकते, कोई हाइडेगर भी हमको नहीं समझा सकता, इसको शास्त्र भी नहीं समझा सकता। ये जो स्वातंत्र है, यह स्वातंत्र कहीं बाहर की किसी सत्ता से नियंत्रित नहीं है, यह भीतर से आ रहा है। ये मुख्य बात है। इस मुख्य बात को अगर हम समझ रहे हैं, तब तो यह जो हमारा ये भेद है, यह भेद आ जाता है। और जिसको वो वैषम्य समझते हैं, वो ऊपरी वैषम्य है, भीतरी ऐक्य है। जिसको वो डेमोक्रेसी समझते हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी अनेक विचारों को होना है। मैं यहाँ पर पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ने के लिए दर्शन विभाग में हमारे मित्र सहयोगी राज साहब बैठे हैं, विदेश से बहुत से विद्यार्थी आया करते थे। मैं उनसे पूछता था पहले ही दिन कि तुम क्यों पढ़ने आए हो, कैसा सुंदर है तुम्हारा देश और कैसा सुंदर है यूरोप पश्चिम, कितना अच्छा है, खूब समृद्धि है, खूब सफाई है, खूब प्रगति है, सब कुछ तो है, पर आप वहां छोड़ के ये जादूगरों का देश है, ये सपेरों का देश है, ये गंदगी है यहाँ पर, यहाँ सब, यहाँ क्यों आए हैं आप? अगर वो कुछ जवाब दे पाते थे तो आगे मैं पढ़ाना शुरू करता था, नहीं तो मैं उनसे कहता था कि थोड़ा इस पर सोचो। एक बार यूनान से आए हुए एक मित्र ने जवाब दिया, उसने कहा कि मैंने बहुत उससे कहा कि नहीं, तुमको जवाब देना पड़ेगा तभी मैं पढ़ाऊंगा। उसने कहा देखिए,
जिस स्वतंत्रता का अनुभव मुझे बनारस में होता है या हिंदुस्तान में होता है, उस स्वतंत्रता का अनुभव मुझे अपने देश में या पूरे यूरोप में नहीं होता। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता और हिंदुस्तान, और वो भी बनारस। सुबह से उठ के शाम तक इतनी बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतनी बार कुल्ला करना है, इतनी बार ये खाना है, ये नहीं खाना है, और यहाँ विवाह करना है, यहाँ नहीं करना, यह तो हर चीज बंधी हुई है, स्वतंत्रता कहाँ है? कहा चुप रहा, और उसने कहा कि नहीं गुरु जी स्वतंत्रता यहाँ है और उसी के लिए हम लोग आते हैं। तो क्या है? उनका ऐसी घाट पर चाहे जैसे घूमूं, कपड़ा पहन के घूमूं, कपड़ा उतार के, मैं अद्वैतवादी हूँ, मैं भेदवादी नहीं, मैं कुछ भी हो सकता हूँ, कोई मुझे रोकने नहीं आता है। आप ऐसा मेरे देश में नहीं कर सकते। और ये अनुभव मुझे तब हुआ जब मैं कई महीनों के लिए पश्चिम में जाके कई देशों में, अलग अलग देशों में रहा। अगर आप उस if you are within the system, then it is all right. And if you deviate from that system, you are persona non grata. एक मैं रुका, अपने साथ पोथी पत्र वगैरह भी लेके मैं जाता था पश्चिम में, तो मेरे मित्र थे, उनके घर में रुका हुआ था, कमरा था, मैंने पूजा की और तो कुछ नहीं कर सकता था। अगरबत्ती जलाई मैंने, वो थोड़ी देर बाद वो आ गए, ये आपने क्या किया है? अरे अभी पुलिस आ जाएगी यहाँ पर, थोड़ी देर में पुलिस यहाँ इकट्ठा हो जाएगी, यहाँ से ये जो स्मोक है ये खाने तक इसकी खबर पहुंच जाएगी और मैं भी परेशान होऊंगा, आप भी होंगे। उन्होंने लेके अगरबत्ती, आप सोचिए, मैं मेरी स्थिति सोचिए। फिर मैंने तय किया कि मैं पश्चिम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं या तो अपनी पोथी पत्र छोड़ के जाऊं और या तो फिर ये जाके पुलिस को मैं फेस करूं। ऐसे अनेक स्थल आए हैं। ये स्वतंत्रता है, यह जो अंतर विचारों की स्वतंत्रता है, विचारों की स्वायत्तता है। ये विचारों की स्वायत्तता इस देश की अपनी खास बात है, और इसलिए ये सारे शास्त्रार्थ, सारी बातें, ये सब इसमें आ पाती हैं। अब ये बात अलग है, तीगर आज क्या हालत है, ये तो इस देश का अतीत है और बहुत निकटवर्ती अतीत है। इस समय that sort of aggressive designs of the globalization and the market economy, वो कहाँ ले जा रहे हैं, वो कैसे हमको करें, और उसमें इस नई पीढ़ी के रहने की बात है, इसको कैसे हम देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न मेरे मन में आपकी किताब को पढ़ने के बाद समझ में आए, जिनको मैं वर्षों से सोच रहा था और कह भी रहा था। मुझे खुशी हुई कि आपने उन बातों को सप्रमाण यहाँ पर उठाया। अप्रमाण नहीं है, सप्रमाण बातों को दिखाया है। हाँ, इतना जरूर है कि जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि हम पश्चिम विरोधी नहीं, पश्चिम के भेद को समझना चाहिए, बट वी आर नॉट अपोज्ड टू एनी सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आज जो डोमिनेशन है उसको अगर कोई चुनौती दे रहा है इस दुनिया में तो केवल हिंदुस्तान से मिल रही है। एशिया से मिलनी चाहिए थी, जापान कब का प्रणत हो गया, चीन हो गया, चीन के पास कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब है पूरी दुनिया के सामने, किसी विकल्प को कोई रख सकता है। हम है तो ये विकल्प नहीं है, तो ये सार्वभौम सार्वकालिक, पर अगर तुम समझते हो विकल्प है तो विकल्प ही रहने दो बाबा, पर रहने तो उसको नष्ट तो मत करो। क्या होगा इस दुनिया का अगर यह अकूत परंपरा, अथाह गांधीर्य, अथाह ज्ञान अगर चला जाता है तो इस दुनिया का क्या होगा, ये तो सोचिए। और दुनिया का तो बाद में होगा, मेरा क्या होगा? मैं क्यों दुनिया की चिंता, काजी जी काहे को दुबले शहर के अंदेशे से, तो मैं शहर के अंदेशे से दुबला नहीं हो रहा हूँ, मैं खुद अपने
लिए नहीं कर पाऊंगा तो दुनिया को क्या करूंगा। इसलिए ये जो सब है, ये चुनौती है कि हम सबके लिए, मेरे लिए आपकी किताब, इसलिए हमारे लिए, और इसके बाद बात दूसरे के लिए होगी। वो समझना चाहते समझे, नहीं समझना चाहते मत समझे, पर हम तो समझें। इसलिए आप कृपा करके इस पर भी विचार करिए, ये अनुमति दीजिए। आपने उसमें लिख दिया है ना कि इसे एक लाइन भी कोई उद्धरण करने के पहले हमसे पूछो। वो जो प्रॉपर्टी है वो उससे इसको अलग करिएगा, तब जाके ये पहुंचेगा। हम लोगों का तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ज्ञान किसी की संपत्ति नहीं होता, ज्ञान तो सबका, उसमें संपत्ति क्या है हमारी। हमने इसको देख लिया है, बस ठीक है। वो हमने भी क्या देखा, चला आ रहा है, वो है, भीतर है, निहित है, और हम उसको केवल कहते हैं। उसमें हम इसमें हमारी संपत्ति कुछ नहीं है। हाँ, दूसरी बात है कि हम पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर हम जब किताब आ जाती है तब मुझको ये लगता है कि अरे अब तो मैं ही इस बात को नहीं कह सकता। यही जो स्थिति है उससे उबर करके सबसे बड़ा ज्ञान की सबसे बड़ी, पश्चिमी ज्ञान की सबसे बड़ी कमी है कि ज्ञान उनके यहाँ संपत्ति है, हमारे यहाँ नहीं। इसी से सब बड़ा विद्या, इसी से साइंस और अध्यात्म सब की बुद्धि इसी से सुलझती है। मैं ये देख रहा हूँ कि समय बहुत हो गया है, लेकिन सभी बातों पर मैं टिप्पणी भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी बातें कही गई हैं, उन पर सब पर टिप्पणी करना संभव ही नहीं है आज की संध्या में। मैं समझता हूँ कि अभी आपके मन में कई सवाल होंगे, थोड़ा समय दिया जाए।